Hello everyone, a very warm welcome to Novation. I'm Shantanu and I welcome you all to a very important session जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं न्यू IT रूल्स के बारे में which are concerning the OTT platforms and some more platforms which we'll discuss in this lecture. We will see why these rules are required and what these rules basically are and what are the critics of these rules. Okay, so this will help you to write your VAT, GDs and also for your preparation of personal interviews. Okay, and if you have any queries, you can as always contact me on any of these social media platform, and you can also visit novation.in where you can get the PDFs of these lectures and also you can give various quizzes. और अगर आपको Novation का content अच्छा लगता है तो आप Novation को donate करके support कर सकते हैं. Alright friends, so with that let's start today's session. So we'll start with setting the agenda for this lecture. So first we'll see who all entities are under the purview of these new IT rules. Then we'll see why these new rules were required. Then we'll see what are these new rules actually. And then we'll finally see what are the criticism and concerns regarding these new rules. Okay. So who are under the purview? So first of all, as I told you, OTT platforms, then social media firms and then digital news. अब OTT platforms होते हैं friends over the top platforms. So here you can request whatever type of content you want that you can watch. So these are different from televisions or movies. Okay, so platforms like Netflix, Amazon Prime, Hotstar, etc. जहाँ पे आप online content देख सकते हैं. Coming to social media platforms, so it will include companies like Twitter, Facebook, Instagram. All these will be under the purview of this new IT rules. Then digital news websites, so Quint, The Wire, News Laundry, etc. So these type of news media houses, they are only present as a online platform. They don't have their print channels or their television channels. Okay. So I hope this is clear. We'll move to the next one. So why these new rules were required? So what is the need for having certain rules related to OTT platforms or social media or even the digital news media? So there have been very important recent developments like recently the shows released like Tandav, Patal Lok, Leela, etc. These created lots of controversy because they were hurting the sentiments of especially the sentiments of Hindu religion. Okay, so these developments it led to a lot of complaints which were sent to the government of India. So they even government of India and also the Supreme Court, बहुत लोगों ने इसके बारे में complaints की थी. Then coming to misleading and fake news, we all know कि social media platforms पर बहुत ज़्यादा fake news बहुत जल्दी से फैलती है. It spreads like a wildfire, which can cause very brutal incidents in our society. So there can be incidents like various posts to misuse and abuse social media platform through morphed images, obscene pics. Especially women are majorly attacked through this obscene images or morphed images. Then there was no proper grievance resolution forum available up till now. So ये rules के द्वारा एक grievance redressal forum का भी गठन करना पड़ेगा इन सब companies को, ताकि अगर कोई social media का user है and he is having some grievance, he can go ahead and complain to these websites. Then we have also seen that anti-national and cross-border incitement to violence is a major issue recently from the development of the toolkit incident which we saw. Then child pornography case, so this is also a very serious issue. And next, so we know that the print channel like the newspapers and the television channels, they are governed by certain bodies. So print medium, the newspapers are governed by the Press Council of India, and television, both news and entertainment are regulated by the Cable Networks Regulation Act of 2005. So दोनों channels पर कुछ ना कुछ regulatory body का एक oversight होता है. बट ये जो कंटेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होता है दोस्तों, उन पर अभी तक कोई भी एक क्लियर गाइडलाइन नहीं है उन पर कुछ रेगुलेशन होने के लिए. सो देयर इज नो लेवल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि किसी पे आप रेगुलेशन लगा रहे हो और किसी कंटेंट क्रिएटर पे नहीं लगा रहे हो, सो इट इज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड. हेंस थ्रू दिस न्यू रूल्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड विल बी क्रिएटेड. Then Supreme Court of India has also issued to the center a notice that and the Internet and Mobile Association of India, इन दोनों को ही notice दिया गया है that it should regulate OTT platforms such as Netflix, Amazon Prime, etc. So हमारा जो Apex Court है उसने भी सरकार को यही बोला है कि there should be some rules and regulations related to the OTT platforms.
सो नाउ व्हाट आर दीज न्यू रूल्स. तो हम नए रूल्स की बात कर लेते हैं, क्या नए रूल्स हैं. So the government has decided to make a soft touch oversight mechanism established by elaborate discussions among Ministry of Electronics and Information Technology, Ministry of Information and Broadcasting and stakeholders like OTT firms. So जो हमारे Ministry of Information and Broadcasting के मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने बताया कि उन्होंने काफ़ी कंसल्टेशन किया है कई सारे स्टेक होल्डर्स से, इंक्लूडिंग द पीपल फ्रॉम सोशल मीडिया, पीपल फ्रॉम OTT फर्म्स एटसेट्रा. एंड आफ्टर दैट दे हैव डिसाइडेड टू मेक दिस सॉफ्ट ओवरसाइट मैकेनिज्म. और फ्रेंड्स, जो ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे जिनको सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहा जाएगा, दे विल बी हैविंग क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स प्रेजेंस. सो दे विल हैव टू एनेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिशिंग ऑफेंसिव content that can invite imprisonment of more than 5 years. So social media platforms को बताना पड़ेगा कि ये fake news या कुछ offensive content किस यूजर से ओरिजिनेट हुआ है, ये बताना पड़ेगा इन नए रूल्स के कारण. ओके. एंड जो ऐसे सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे उन्हें चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा, एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन एंड अ रेसिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर विद इन द 3 months. सो आने वाले 3 month में उनको इन पोस्ट्स को फिल करना होगा, अपॉइंट करना होगा. ओके. एंड इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड द publisher of news and current affairs content will also need to publish a monthly compliance report. This is important. So these news platforms, online news platforms and social media platforms should have a monthly compliance report. They should file it with the government of India, and this will tell how many complaints they received and how many they were able to redress for the grievances. Coming to the next few points. So if some content is deemed offensive by court or the government of India, then social media firms have to pull it down within 36 hours and 24 hours if it's a sexually offensive content. So this is pretty self-explanatory that government has told the social media platforms कि आपको आपका content हटाना पड़ेगा अगर court या government उसको offensive मानता है. Similarly, अगर वो sexually offensive content है, then it should be removed within 24 hours. Okay. Coming to the next point. So social media firms cannot host or store and must take down content prohibited in the context of India's sovereignty. अगर वो इंडिया की sovereignty को hurt करता है या integrity को hurt करता है या फिर violence के लिए incite करता है लोगों को, then such content cannot be stored, cannot be hosted and should be removed from your social media platform. Okay. Next, coming to the OTT platforms. So now they will have to self-regulate themselves or self-classify their content into 5 age-based category: -U, 7+, 13+, 16+ and A-rated content. So जैसे कि आपने देखा होगा फ्रेंड्स, मूवीज को रेट करा जाता है, उसी तरह से अब OTT प्लेटफॉर्म को भी खुद को रेट करना पड़ेगा खुद के कंटेंट को. ओके. बिकॉज दे वर नॉट डूइंग इट अप टिल नाउ दे विल हैव टू डिस्प्ले इट टू देयर कस्टमर्स. ओके. कमिंग टू द 3-tier मैकेनिज्म. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 3-tier मैकेनिज्म भी बनाया है, उसको भी हम देख लेते हैं दोस्तों. सो एज पर द न्यू रूल्स, सोशल मीडिया कंपनीज, OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एंड डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स, ऑल दीज 3 स्टेक होल्डर्स विल नाउ कम अंडर अ 3-tier रेगुलेटरी regime. सो फर्स्ट लेवल क्या है इस रेगुलेटरी रिजीम का, वो देखते हैं. लेवल 1 विल बी द सेल्फ रेगुलेशन बाय द कंपनी इटसेल्फ. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सेल्फ रेगुलेशन का जो है वही पहला लेवल होगा. नाउ द कंपनी इन दीज 3 categories शुड हैव द details of the grievance redressal officer on their website, and if any person, let's say I have a complaint regarding any of the content on the website, I can directly reach out to this person and within 15 days my problem has to be resolved, my grievance has to be addressed. Okay, so this will be the self-regulatory level or the first most basic level of regulation. Now coming to the second tier or the level 2 of this mechanism. So यहाँ पर बोला गया है इसको self regulation by self regulating bodies. Okay, so these bodies are basically having experts from the industry. So let's say we are talking about a company which is an OTT company. So it will be governed by an industry body which will have an retired judge empaneled by the government and will also have many experts related to the OTT industry that will actually address the complaints made against my company if I'm a OTT company and someone has went to the level 2 of redressal. Okay.
कमिंग टू द फाइनल थर्ड टियर और द लेवल 3, फ्रेंड्स यहाँ पर पूरी तरह से गवर्नमेंट और मिनिस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होगा. गवर्नमेंट रेगुलेशन वाया इंटर डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट कमेटी अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. सो यहाँ पर मिनिस्ट्री एक बॉडी गठन करेगी और वही जो कमेटी होगी वही रेगुलेशन या कंप्लेंट्स को redress करेगी. देन दिस मिनिस्ट्री शैल कॉन्स्टिट्यूट एन इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी. अब ये जो कमेटी होगी फ्रेंड्स, इसमें कई सारे मेंबर्स होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे. कहाँ के? फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, और कई सारी ऐसे मिनिस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो कि ये डिसाइड करेंगे, कंप्लेंट्स रिड्रेसल को डिसाइड करेंगे. ओके, सो दैट विल बी द फाइनल लेवल ऑफ दिस मैकेनिज्म. नाउ कमिंग टू द प्रोसेस फ्लो. सो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कैसे प्रोसेस फ्लो होगा. सो लेट्स से आई रिसीव अ कंप्लेंट फ्रॉम वन ऑफ द पर्सन हु वॉच्ड माई कॉन्टेंट on my OTT platform. So I have a grievance officer. He is having 15 days to redress that complaint. Let's say after 15 days his complaint was not resolved or the person was not satisfied with the redressal, then he can move to tier 2. Okay, so here tier 2 again he'll go to the industry body grievance committee. If the industry body grievance committee does not resolve it within 15 days, he can move to tier 3 directly, where the government or the government committee, the ministry committee will be deciding on this complaint. Okay, so that's how the process will flow now. Now friends, there are various concerns and critics of this new rules. सो लेट्स सी देम वन बाय वन, बिकॉज हमें अच्छी चीज़ें भी पता होना चाहिए रूल्स की, तो हमें साथ साथ उसके क्रिटिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए. दैट इज हाउ यू कैन एस योर GDs, PIs और VATs. So the action can be taken under each level includes a removal of the content, issuance of an apology, giving a warning, changing the rating of the content, etc. So friends, जो एक्शन लिया जा सकता है वो इनमें से हो सकता है कि कंटेंट को पूरी तरह से रिमूव किया गया, या फिर कंटेंट क्रिएटर द्वारा अपॉलॉजी या फिर माफ़ी मांगी जाए, या फिर एक वार्निंग देके छोड़ा जाए, या फिर रेटिंग को ही चेंज कर दिया जाए उस कंटेंट के. सो ये सारी चीज़ें एज एन एक्शन ली जा सकती हैं अगेंस्ट द OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर. Okay, so what now? Since content can be removed from these due to these complaints, there is a lot of fear among the various content creators or on the OTT platforms that government is trying to force censorship. There is a serious fear of censorship that government is trying to curb the freedom of speech. So ये बहुत बड़ा एक fear है among various stakeholders. Now this point is very important related to the privacy concerns. So these draft IT rules prepared by the ministries, they have introduced one requirement, as I told you, that the originator of information will be traced. ओके, अगर कोई फेक न्यूज़ आती है या कुछ वायलेंस इंसाइट करने की कोशिश होती है तो उस ओरिजिनेटर का पता किया जाएगा. सो व्हाट दिस बेसिकली इम्प्लाइज, इट इम्प्लाइज दैट दिस इज गोइंग टू ब्रेक द एंड टू एंड एनक्रिप्शन ऑफ द चैट्स ऑन WhatsApp Messenger, Signal Messenger and any other messenger. Now what this end-to-end encryption does is that if I'm WhatsApp, I cannot read your chats, or any other third party cannot read your chats. But if government sets the traceability option, then this is basically breaking the end-to-end encryption, and this creates a lot of issues related to the privacy concern of the normal public. So this is another very important critic of these new rules. Lastly, a multi-ministry government body can ultimately decide what content can be published and what cannot be published. So यहाँ पर सीधा एक गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आ रहा है कि गवर्नमेंट की बॉडी ही फाइनली लेवल 3 पे गवर्नमेंट की बॉडी डिसाइड कर रही है कि क्या पब्लिश होगा और क्या पब्लिश नहीं हो सकता है. सो दिस अगेन क्रिएट्स द इशू ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. सो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं. एडवांटेजेस को आप कंसिडर कर सकते हैं, जो स्लाइड हमने देखी वाई दीज रूल्स आर रिक्वायर्ड, और डिसएडवांटेजेस आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं. So friends, with that we come to an end to this session. I hope the session was insightful, और आपको now you can debate from both sides of the topic. If you are asked to tell the advantages or the disadvantages, you can talk from both the sides. So friends, if you like the video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and subscribe to Novation for more such important videos. And as always, please visit novation.in. Here you can support the work done by Novation by going to the donate button. With that friends, I'll close today's session. I'll meet you again next time. Until then, bye bye, and please take care.